Hello, namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. Hello, namaskar, and good evening to you all. Welcome to Meri Awaaz Suno. Wait a minute, आपकी आवाज़ सुनो. No, not my, not my voice. Certainly not. We'll come to that later. Yeah. We have a great audience here. Um, so I think it's an honor to be presenting to an August audience in a prestigious venue like this, and we are delighted. It's indeed an honor to be here and presenting in front of all of you, taking you to a beautiful journey, a beautiful musical journey, from since Hindi film music started until today. Yeah, and this is Rajita Nandakishore, And here we have Gopi Nair. and we'll be hosting this evening, and we'll be taking you through a journey of Bollywood music, starting from the 1960s to this decade. Where did this all begin? Um, you would all know that the first ever Hindi movie was Raja Harishchandra. Yeah, of course, but that was a silent movie, That's correct. though. And do you know which Hindi movie started off with voice? Any guesses? That's Fantastic. correct. Alamara. Alamara. Since then, Bollywood music has come a long way to a point where music track defines movies' popularity and appeal. Of course, from Carnatic and Hindustani music to pop and Sufi, Bollywood music has certainly come a long way. Um, From Mohammad Rafi to Arijit Singh, Lakshmikant Pyarelal to A.R. Rahman. it's a long list of genius, talented entertainers we have. And today, we are excited to bring to you one of the London's most popular live orchestra, which is MAUK's Nisari. They have performed a number of with a number of playback singers from India, including the seven-time national award-winning K.S. Chitra. Without any further ado, let's welcome the star of the show. We have Rajesh, Rajesh Raman. Rajesh Raman. He's Asianet Europe Talent Hunter winner 2001. 2011. Oh, so, I'm sorry, Just a correction there. 2011. He I has apologize. rendered a number of South Indian, Bollywood, and Carnatic music programs across UK, US, and India. He has received numerous online albums and likes to improvise and give personal touch to all the songs he sings. He has secured special appreciation from the Jnanpith Foundation for poetry recitation. And we are all excited and delighted that he is awaiting the debut Malayalam movie where he is composing and also singing a song. So here we have Rajesh Raman. Thank you, Rajita and Gopi. It's a wonderful moment to be here, to be performing in front of all of you. Hope myself and Nisari Orchestra. Let me welcome my team here. So, yeah, please come onto the stage. So we'll try to take you through the golden era of Hindi, Bollywood songs till the recent times, where we have a lot of chart busters, in front of you. So. We will start with the 70s songs to begin with, and Let's begin with a song that has won the Filmfare Award for
Best Lyricist, Best Music Director, and Best Playback Singer. And this is from the movie Dosti. It's a composition by Lakshmikant Pyarela, written by Majhu Sultanpuri, in the voice of Rafi Sahab. Sorry, slight correction. It's in the 60s. We're starting with a song from the 60s, not 70s. Thank you. Thank you. As you know, Dosti was released in 1964, if I remember right. And you know, it was a big hit. And you know, Mohammad Rafi Saab's voice, as you know, he's a Badshah of Bollywood. So this is my humble tribute to him to begin the show. Hello. चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा।
Thank you. Thank you very much. Hello. Wow, what a beautiful rendition, Rajesh. Thank you. Thank you. After this gem from the 60s, let's move on to the 70s now. So another question for you. The movie name suggests Heart Stealer. Any guesses? Can you guess the name of the movie? It means Heart Stealer. Or No? it's definitely a chore, yes. Chichor. Chichor. Music composed by Ravindra Jain and sung by celestial singer KJ Yeshudas. This song brought the National Film Award for Best Playback Singer for KJ Yeshudas. It's Gori Tera Gaon from Chichor. Enjoy. Enjoy. Yeshudas ji is one of my personal favorite. He's one of my idols as well. And I think this is from his first movie in Bollywood back in 1976, if I remember it right. Gori Tera Gaon Bada Pyara. गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलियाँ पहना दूं, कुह कुह गाती कोयलियाँ को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे तिनके जमारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो, जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे।
परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गया जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। Thank you very much. So much. Thank you so much, Rajesh. That was a mellifluous rendition of the song. The next one, we are taking you all to the 1980s. The song we're going to present you next is from movie Yarana, that was released in 1981. Music composed by Rajesh Roshan and lyrics by Anjan. The song was rendered by none other than Kishore Kumar, one of the most versatile playback singers known to Bollywood. Enjoy. This song also won the Filmfare Award for the Best Playback Singer for the year. Let's have Rajesh take over. Hope you all enjoy it. What can I tell about Kishoda? He was common man singer, if I can say that. Everyone used to enjoy Kishoda's rendering, irrespective of whether they know classical songs or they know music as such. It used to just come from his heart. He used to sing all the songs with so much emotions and depth, which came naturally to him. And if you all remember, Kishoda was very versatile. He was an actor, music composer, singer, and he was like all in all. So this is from the movie Yarana. On screen, if you remember, was Amitabh Bachchan. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तुझ कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मैं
मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने था इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने था इशारा। जो कहे जीवन भर प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने था इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने था इशारा। Thank you. Please give Thank a you very big round much. of applause. Thank you. That was beautiful, Rajesh. We now come to A.R. Rahman's era. 1992 was the year. And the movie is Roja, which won the National Film Award for Best Film and Best Music Director of the Year. Mani Ratnam acclaimed national fame from this film. And A.R. Rahman, I am sure he doesn't need any special mention as such. This song was sung by S.P. Balasubramaniam, and I'm not sure if you are aware that he holds a Guinness World Record for recording the maximum number of songs. So, Roja Janeman from the movie Roja. Please Over to you, enjoy. Rajesh. Hello, check. And I think when we come to 90s, most of the movies which A.R. Rahman had composed, both came in Tamil and the South Indian languages as well as Hindi. So this song is very popular all over India, in most of the South Indian languages as well as Hindi. So here we go. Hello. Hello, check.
हो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। छूके चली हवा जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हो क्यों, जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतजार है तेरा, तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आए, कहाँ है तू, कैसी है तू, रो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा। ठंडी ठंडी ये हवा तेरा काम क्या यहाँ, प्रीत नहीं पास में चांदनी तू लौट जा, फूल क्यों खिले हो तुम, जुल्फ नहीं वो यहाँ, झुके झुके आसमां मेरी हसीना उड़ा, प्यार के बिना मेरी जिंदगी उदास है, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तेरी आस है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा। Thank you very much. Thank you. That was fabulous, Rajesh. Thank you, Rajita. Thank you, Rajesh. The next one is from the movie Dar, a violent love story. Yeah. And this movie saw SRK playing a obsessive lover. And the film won
the National Film Award for Best Popular Film providing wholesome entertainment. The music was composed by Shivkumar Sharma and Hari Prasad Chaurasia combination. And it was sung by one of the most versatile singers, Udit Narayan. And he is the only singer who has bagged the Filmfare Award for Best Playback Singer over a period of 3 decades. So something of an achievement there. And over to you, Rajesh. Thank you. Hope you enjoy this. Enjoy. Udit Narayan is one among the very sweetest voice in Bollywood, if I can say that, I think, and he has a unique voice too. I think most of the singers, have come to the industry admiring other singers like Sonu Nigam. He was and is a big fan of Rafi Saab, and he has flair of Rafi Saab's voice. Udit Narayan, for me, his voice is very unique and sweet, and this is one among his sweet renditions from a beautiful movie, Dar. Hope you remember the song and the scenes. Thanks, Smith. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं,
तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। Thank you very much. Absolutely fantastic, Rajesh. Just took me back to the intensity of SRK in the movie. So the next one is interesting. I've lost my co-anchor here. So obviously you know she's going to sing. Now the song is from the Khiladi series, from the second movie in the series, Main Khiladi Tu Anari, with Akshay Kumar and Shilpa Shetty dancing on a beach to a beautiful picturization there. Music by Anu Malik, a hit maker. I hope you all enjoy this. Thank you. A hit maker in 90s, and I think it was 90s, you know. There used to be an era where, you know, all the songs were from Anu Malik, and it used to be like Akshay Kumar, Amir Khan, and likes of those time heroes. So this one is a beautiful one from Main Khiladi Tu Anadi, I believe, right? It's one of the, it's the second one from the Khiladi series that Akshay Kumar played. Before that, I would like to thank Rajesh, for letting me sing with him. It's actually an honor to sing with. It's an honor to sing with you as well, Rajesh. Rajita. There you go. चुरा के दिल मेरा गोरियां चले, चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के निंदिया कहाँ तो चली। ओ पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ तू चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। हो चुरा के दिल में
बता दूं मेरे दिल में क्या है, वो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई हैं बेताबियां कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। हो चुरा के दिल मेरा दूरियां चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। नहीं बेवफा मैं, ये तुमको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। नई हजरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई सजा तो न लोगे। हो वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की है, मगर इस जगह में हंसी और भी है। कसम मेरी खाकर इतना बता दो, इसी प्यार से दिल लगा तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके आके मिल, टूट न जाए प्यार भरा है मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। चुरा के दिल मेरा दूरियां चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। Thank you very much. Thank you, Richard. It was awesome. Thank you. Absolutely fantastic combination there, Rajesh and Rajita. Thanks, Gopi. Thank you. Now we move on to the 2000s. The next one is from the movie Dil Chahta Hai. This movie was critically acclaimed
and attained a cult status in the beginning of 2000. The song was sung by Sonu Nigam. As you all know, he's a versatile artist and has been a popular singer over 3 decades now, beginning with some of his albums that we are used to hearing, Jaan, Deewana, Janam. And the music was composed by Shankar Ehsan Loy. They don't need any introduction here. So enjoy the song from